फ्रेंड्स, नमस्ते, धन्यवाद। मैं हूं श्री राम लक्ष्मण नौलखा। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के कुछ डिसीजंस का इंटरप्रिटेशन, कमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड मैनी मोर एंड लर्निंग लेसन। चैनल का उद्देश्य है, श्री राम लक्ष्मण नौलखा चैनल का उद्देश्य है अवेकनिंग प्रोफेशनल्स को अवेकन करना, जानकारी देना, नॉलेज देना और कुछ अच्छी बातें एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना। The case number is 008/2024, delivered by National Financial Reporting Authority on 12th of April 2024. Friends, I will go directly to the point of lessons we must learn. Apart from penalties which have been levied, the highest ever I have heard, 1 crore penalty on the engagement partner and firm and many more. Friends, one of the lapse in this order 008/2024 dated 12/4/2024. It is in respect of company name is Statutory Audit of Reliance Capital Limited, financial year 2018-19. We are not concerned with who are the engagement partner, who are the EQCR. What is important is that what we can learn from this order and what has been the lapses by the CFM or the EQCR. Now, one of the lapses has been alleged by the NFRA is omission and commission of EQCR, Engagement Quality Control Review, EQCR, और EQCR को हम एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूवर भी कभी कभी डेजिग्नेट करते हैं। ज्यादातर ऑर्डर्स में, नेफ्रा के ऑर्डर्स में आप देखे होंगे कि EQCR को उन्होंने बहुत बहुत अटेंशन भी दिया है और हाईलाइट भी किया है और पेनल्टी भी बहुत बड़ी बड़ी लेवी की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे EQCR जो भी थे उनको 50 लाख की पेनाल्टी दी गई है और 5 साल के लिए रिवार्ड किया है। तो समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। आप में से काफी लोगों ने ऐसे 220 एंड HQC1 दो छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, एक फर्म लेवल पे अप्लाई होता है और ऐसे 220 इंडिविजुअल एंगेजमेंट लेवल पर। हार्डली 100 पेज के ये स्टैंडर्ड है। इसी के अंदर EQCR की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या उसको देखना है, what he has to check an account and make a documentation that he has done so and so work. Now the allegation is for this फाइनेंशियल ईयर रिलायंस कैपिटल का जो ऑर्डर हुआ है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ रिलायंस कैपिटल के ऑडिटर के लिए फाइनेंशियल ईयर था 2018-19। शोकाज वाज इश्यूड very latest 25th of July 2023. Within 7-8 months, NFRA has delivered the order. This is also a learning point. केस को सेलेक्ट किया और फटाफट हियरिंग किया और डिलीवर भी कर दिया। फ्रेंड्स, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो जनरली अभी तक हम ऑडिट फर्म्स में या तो इम्पोर्टेंस नहीं दी या इग्नोर किया है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। उसी के ऊपर पुराना साल है फाइनेंशियल ईयर 18-19। जागृति लानी है, हमें पढ़ना है EQCR क्या होता है। फेल टू ऑब्टेन फॉर ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन, failed to obtain for objective evaluation. While EQCR ने क्या अपना आर्गुमेंट लिखा है कि मैंने आई एम नॉट बाउंड बाय द एसेट 230 यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। EQCR partner said he did not make any professional judgment during his review. Objective and essentially involves forming independent conclusions and judgment and thereby challenging the engagement team rather than blending following the judgment by the ET. यहाँ पे नेफ्रा जो कंक्लूड कर रहा है वो कह रहा है कि he failed to make an objective evaluation
Now, what was the objective evaluation and what is the objective evaluation की process है? Objectivity essentially involves forming independent conclusions and judgments and thereby challenging the engagement team rather than blindly following the judgment by the engagement team. Further, documenting discussions with the engagement team is essential in proving the objectivity which the EQCR partner did not indicate. Friends, आप देख सकते हैं ये अपना SS220 मैंने अभी आपको दिखाया 220 का और S2C1 दोनों ही आप देख सकते हैं क्लॉज 20-21 से शुरुआत होती है 20 नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 27 में लिखा है extent of engagement quality control review may depend among other things on complexity of the audit engagement, whether the entity is listed and the risk that auditor's report might not be appropriate in the circumstances. A28 में लिखा है SA 701 applies the conclusions reached by the engagement team in formulating the auditor's report include the audit matter, etc. Engagement quality control review of listed entities. EQCR perform करना हर एक केस में not necessary, but listed entities के केस में it has to be performed as is compulsory and mandatorily required. A29 of SA 220 paragraph says, other matters relevant to evaluating the significant judgment made by the engagement team that may be considered in an engagement quality control review of listed entities and include significant risk identified during the engagement in accordance with the SA 315 and the responses to those risks in accordance with 330 SA 330, including the engagement team's assessment of and responses to the risk of fraud in accordance with SA 240. Judgment made particularly in respect of materiality and significant risk. Significance and disposition of corrected and uncorrected misstatements identified during the audit. Matters to be communicated to management and those charged with the governance wherever applicable, other parties such as regulatory bodies. Depending upon the circumstances, may also be applicable for engagement quality control review for audit of financial statement of other entities. Friends, listed entities के लिए खास और we have to take care. ये जो ऑर्डर है लिस्टेड एंटिटीज के लिए है एंड जब लिस्टेड एंटिटीज में ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं होता है तो यू आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. अब देखिए क्या हो सकता है S2C1 के हिसाब से एक रिव्यूअर को क्या देखना हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है देखना. Timely review of the following by the engagement partner at appropriate stage during the engagement allows significant matters to be resolved on a timely basis to the engagement partner satisfaction on or before the date of auditor's report. Critical areas of judgment.
especially those relating to difficult or contentious matters identified during the course of engagement, significant risk, other areas the management partner considers important. Engagement partner need not review all the documentation but may do so. However, as required per SA 230, the partner documents the extent and timing of the review. फ्रेंड्स मैसेज ये है आप सबको इस छोटे से वीडियो में जरा ध्यान से पढ़ें एक एक लाइन को पढ़ें माइन्यूटली पढ़ें क्योंकि नेफ्रा का केस अगर आपको सेलेक्ट हो गया तो बाल की खाल निकलना स्वाभाविक है अभी तक हम ट्रस्ट पे इम्प्रेशन पे गुड फीलिंग पे और इंस्टीट्यूट का भी लिबरल अप्रोच पर साइड चल रहे होंगे but on coming to National Financial Reporting Authority in the picture, we have been more responsible held and heavy penalties and debarments are there. So don't make a lapse. Listen again. EQCR, EQCR, EQCR. SA 220, HQC 1. But simply don't make a checklist. Don't make a yes no checklist. Objective evaluation during the course of engagement, discussion, timing, important matters as I discussed. Friends, मैं इस ऑर्डर की खास चीज को आपको इसलिए बताया कि हर एक ऑर्डर में यही बातें आ रही है इसलिए ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए धन्यवाद आपको एक और एपिसोड में लेके आऊंगा जो है 012/2024 डेटेड 26/4/2024 के ऑर्डर उसमें भी क्या लेफ्ट क्या हुई है समझने और सीखने लायक बात ये चैनल है आपके लिए आप खुद भी अगर कुछ बात शेयर करना चाहें चैनल पर यस आई कैन टेक इंटरव्यू ऑन द जूम डिस्कशन ऑन द जूम आप भी इनवाइटेड है प्रोफेशनल डिस्कशन है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही यस आई विल आल्सो गेट इट थैंक्स फ्रेंड्स थैंक्स वेलकम वेलकम वेलकम